Very good evening, and thank you for joining us in the new episode of Enterprise Matters. MSMEs and the 5 trillion economy is the topic that we are running since 18th of June. This is Sushma Morthania, Director General, India SME Forum, welcoming all of you to this current episode of Enterprise Matters, India's only dedicated virtual show for MSMEs organized by India SME Forum. Once again, welcome back to our special focus session today on Enterprise Matters on breaking the glass ceiling, women entrepreneurs of J&K. We all acknowledge and we know that women of India have a major and a very critical role to play in contributing to the 5 trillion economy that we are set out to achieve. Today we have specially invited a group of women from the state of Jammu and Kashmir, rather the Union Territory of Jammu and Kashmir. We all have this impression that we carry that mainly people of Jammu and Kashmir are settled with government jobs and not too many entrepreneurs would exist there. But we want to break and bust that myth in today's session, and we have 6 most enterprising ladies of Jammu and Kashmir here with us today. And I have the pleasure of inviting them on our show. To begin with, so we have with us Ms. Varuna Anand, founder and designer of the Splendor of Kashmir. She is a textile designer by profession for past 19 years, and she has built this brand, the Splendor of Kashmir, for promoting the art of shawl making from Kashmir. She strongly believes that building the trust of her clients in her products is the most vital mantra to catapult sales and take the company forward. Welcome, Varuna ji. Thank you so much. Thank you for having me at your show. Thank you. May I invite Ms. Sana Masood, MP and CEO, Farm to You. May I now welcome Ms. Nalini Moti Sadhu, chef and owner of Matamal. Thank you so much for inviting me. Our next guest is Ms. Rubina Tabassum, MD and owner of United Floritech. Our next guest, Ms. Mahwash Masood, co-founder of Sont Kashmir. Thank you. And our last guest this evening, Ms. Shahryar Khanum, Director of Dairy Farm in Kashmir. And to have a discussion with all you lovely ladies, may I welcome Shri Vinod Kumar, President, India SME Forum. Thank you very much, ma'am. From the same field, we also have Varuna ji from Jammu. She's also set up, almost for last 20 years, she's been doing this. So I'd like to know from you, Varuna ji, why did you set this up? And this transformation from a home baker to an entrepreneur, what was it about? Hello. I'd like to correct you here. My enterprise is about 10 years old. It actually started in 2011. So I am an entrepreneur. I turned an entrepreneur at the age of 42. I'm a textile designer by profession, and by virtue of my marriage, I am here in Jammu and Kashmir.
So I was married to Praveen Anand here in Jammu. It's a known old family of Jammu, and they've been here for many generations. And I am basically from Delhi. And once I came here, of course, since I got married late, I carried on with my work. Wanted to have my family and my children and never really thought of working. It was my husband who wanted to push me towards this craft. Shawls from Kashmir need no introduction for anyone. Everybody knows about these textiles, and they've been revered over centuries. And being a textile designing student, I had studied a lot about them, and I had seen two sides of the world, coming from Delhi, and then being in Jammu and Kashmir, and actually seeing what this craft was all about, and what is available in Jammu and Kashmir, and what is being showcased to the rest of the world. So it was my husband's push in 2011 where he started this company for me by the name of the Splendor of Kashmir. And even then, I wasn't very serious about taking this forward because I always knew he was there behind me to support me and back me. It was only in 2012 where, unfortunately, I lost my husband. He passed away suddenly, and there I was to take this company forward all by myself. So it's from 2012, I would say, I've really put my mind to taking this forward, and God has been kind. I've been able to carry this art to quite a few places and explain to people the difference of what is averagely available and how it is basically what I always say, I sell the art of shawl making. The craft itself, to be embroidering on a fine, fragile fabric like pashmina, makes this a piece of art. And this is what we need to market of our craftsmen. So I have been doing this through standalone shows, and I do exhibitions pan India because I was a single parent and I was responsible for two of my daughters. My module of selling from the beginning was online and through exhibitions only. So I had a website, and social media played a very integral role in my reach to people, in spite of the fact that I traveled across. But social media really played a very, very important role in my success and taking my product to people. So this is what my journey has been so far, and I'm only too glad to be a part of Jammu and Kashmir and very proudly say, yes, I belong to this state. I'm a domicile holder of this state. Well, you are a Kashmiri bride. You are married into Kashmir. So there's no two ways about it. I'd like to go to another women entrepreneurs. So with that, Varuna ji, we would like to hear from you कि आपको क्या लगते हैं, क्या challenges और हैं जिसके लिए हम solutions seek कर सकते हैं, और क्या आप suggest करती हैं? So मैं अपने क्राफ्ट के बारे में कहूँगी जो मैं प्रमोट करती हूँ, एंड हमारी जो पश्मीना शॉल्स वगैरह हैं कश्मीर से, इनको मैं प्रमोट करती हूँ. 2017 से पहले ये they were, because being a handloom product, they were exempted of any tax. 2017 से इसके ऊपर GST लगा गया है. So this GST is a 12% GST. तो ये सबको पता है कि ये प्रोडक्ट बाय नेचर ही बड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है. तो जब हम अपने कस्टमर्स को देखिए, मैं एक जना नहीं हूँ जो ये प्रमोट कर रहे हैं, जम्मू से हो या कश्मीर से हो, हर घर से लोग ये प्रमोट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से करते हैं. तो जो हम हैं, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर से करना चाहते हैं. ये 12% GST हमने देखा है becomes like a something not a client is not very happy paying because the amount becomes very large. एंड जनरल जो कंपैरिजन आता है वो ये आता है कि जी कार्पेट के ऊपर 5% है, आपकी शॉल के ऊपर 12% क्यों है? तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं, ये गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट की तरफ से है. तो मेरी एक ये गुजारिश होगी कि अगर इसके बारे में सोचा जाए और इसमें कुछ तरीके का एक रिवीजन किया जाए, तो जो हमारे ये क्राफ्ट्समैन हैं और जो हम ये ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए प्रॉफिट दोनों का होता है. आज अगर मैं क्राफ्टमैन का कुछ चीज बेचती हूँ तो क्राफ्टमैन को दूसरी और दो चीजें बनाने का उसको इंसेंटिव मिलता है कि एटलीस्ट उसको गारंटी है ये मुझसे सामान खरीद के मेरा सामान बेचेंगी, मेरे साल भर की करी हुई मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी. तो ये दोनों के लिए एक इंसेंटिव है. हम कई बार जब उनसे खरीदते हैं, हमें तो उनका इस पे इनपुट भी नहीं मिल सकता क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है.
तो एक ये मेरी गुजारिश है कि ये जीएसटी का एक इसके बारे में जरूर सोचा जाए कि अगर जो कारपेट्स इतने महंगे हैं उसके ऊपर 5% लग सकता है, तो शॉलों के ऊपर 12% क्यों? और दूसरा जो मेरा मोड ऑफ सेलिंग है, हम एक जगह से दूसरी जगह एग्जीबिशंस लेके जाते हैं, तो जब एक स्टैंडर्डाइज जीएसटी नंबर हमें दे दिया, जो मेरा से जेएनके का जीएसटी नंबर है, जिसके ऊपर बीच का जो नंबर है वो मेरे पैन कार्ड का नंबर है, व्हाई मस्ट आई बी टेकिंग अ न्यू जीएसटी टू एवरी स्टेट आई गो टू? देखिए उसमें मेरा कितना काम बढ़ जाता है। ये सारा काम मैं तो नहीं कर सकती, पर मेरे सीए को मेरे लिए करना पड़ता है, और काम बहुत बढ़ जाता है, किसी के लिए भी काम बढ़ जाता है जिसका कोई फायदा नहीं होता। और हम टेम्पररी लेते हैं नंबर उस जगह का, तो 3-3 महीने बाद वहां डिपार्टमेंट से हमें मैसेजेस आते हैं कि जी आपने पिछले महीने जीएसटी नहीं पे किया। हमने तो टेम्पररी नंबर लिया था एक सेल दिखाने के, जो हम जिस एग्जीबिशन के लिए गए थे उसके लिए। तो ये कुछ जीएसटी सिस्टम में कुछ गवर्नमेंट ही बता पाएगी कि इसका कोई रीजनेबल सोल्यूशन निकला जाए जो हमारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर दे। No, absolutely. Point well taken. मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने एग्जाम्पल कोट किया है ना, 12% ऑन शॉल्स एंड 5% ऑन कारपेट, हमें एक्चुअली जीएसटी काउंसिल को रिप्रेजेंटेशन दिया था फॉर अ सिमिलर केस लाइक खाखरा। जैसे जो खाखरा बनता है उनको इनपुट क्रेडिट कोई नहीं मिलता, जबकि वो उनको जीएसटी पे करना पड़ता था अराउंड 18%. सो व्हेन वी रिप्रेजेंटेड दिस केस, the GST was brought down to 5%. Okay, so we will take this up, this case also, because it is similar. It's just matter of justifying and showing logic and fighting for it. So yes, we will take it up and we'll make a representation on that. And of course, regarding state GST also, it is a valid point, because जब आप सिर्फ फेयर्स के लिए, एग्जीबिशंस के लिए जाते हैं, तो obviously it is just temporary sale, or it is only for maybe 1 or 2 months, not even. Like हमारा एक जीएसटी नंबर स्टैंडर्ड हो गया, that should be, we should be able to use the standard GST number wherever we travel, so that हम एक ही जगह पे अपना जीएसटी दें। बार बार नए नंबर्स लेने के लिए इनका प्रोसीजर होता है। The procedure is pretty, it's not so simple, and it's not so simple to let go of your GST number. अगर मैंने एक महीने में बॉम्बे में एग्जीबिशन लगानी है, चंडीगढ़ में एग्जीबिशन लगानी है, दिल्ली में लगानी है, दिल्ली के साथ साथ अगर गुड़गांव में लगानी है, वो हरियाणा स्टेट में आ जाता है। तो आप मुझे देखिए ना, मुझे तो 4 नंबर चाहिए जीएसटी के। तो काम आसान करने के लिए हम पूरा अपना टैक्स दे रहे हैं, और हम देना चाहते हैं गवर्नमेंट को जो हमने टैक्स देना है। हम सिर्फ कहते हैं कि हमारे लिए प्रोसीजर प्लीज थोड़ा सा इजी कर दीजिए। Very well. Nalini ji, over to you. Is the limit or maybe beyond? Great, Sana ji. Varuna ji, from you. I think I totally agree with what Sanaji has said. I have come from Delhi to Jammu and Kashmir, and believe you me, the women over here are way more enterprising and powerful than you can imagine. Every woman has a dream. Every woman has a passion in her to carry that dream forward. So जिस तरीके से वो कह रही हैं, I'm a business woman myself, and I agree on the fact कि women risk कम लेती हैं. We want to be on a safe zone. We don't want to मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि जी वेंचर कैपिटलिस्ट आपको चाहिए, एंड आई से नहीं जी, मैं जितना अपने बल पे बेच सकती हूँ वही ठीक है। कल को मुझे कोई आके जबरदस्ती बोलेगा कि इतना बेचने में कहाँ से बेचूंगी, आई कांट। इसमें क्रिएटिव काम भी होता है, यू कांट डू इट लाइक दैट। सो women go on a safe thing. So having given these opportunities and given these ideas, if these ideas are floated, जैसे मैं किसी फोरम पे थी जहाँ पर वो मुझे कह रहे थे एक शॉल खरीदनी किसी के लिए बहुत महंगी है, एक पश्मीना शॉल हर जना नहीं खरीद सकता है इतने कारीगरी से, पर वही काम शायद हम कर सकते हैं कि हम उसके कुशन बना लें या कोई छोटा प्रोडक्ट बना लें जो कोई खरीद सकता है। इस तरीके के आइडियाज, इट कुड बी अबाउट जो हमारा वुडवर्क का काम होता है कश्मीर से, वो कहीं पे नहीं होता।
अगर ये हमारे होटल्स पोर्ट्रे करें और ये एक मॉडल सा बन जाता है जो कल को बाहर से आके लोग करवा सकते हैं अपने यहाँ पर. सो आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी it would be something very good for people to carry on with. Nalini ji? Okay. And and Varuna ji and Sana, and I just can't have enough of you guys. I mean, I don't want this to end, but it has been lovely speaking with each one of you. Thank you very much for being here on our show, and I hope to meet all of you very, very soon. So thank you once again, and namaskar. And So much opportunity, and I've been raring to go back to Kashmir and work with all of you and tell you what all I have learned throughout my life. God bless all of you. God bless all of you. Thank you. Thank you. Thank you.